Hello guys, I Dilip sir. Today I will explain chapter 5 of class 5. That is flowers, from flowers to seeds. Parts of a flower. That is flowers that have all four parts are called perfect flowers. The outermost part of a flower is made up of green leafy things called sepals, and their job is to protect the bud before it opens. The colorful leaves of a flower are petals. Inside the petals, like the stamen, thin stalk with eolies dust on their tips. These are the male parts of a flower. The stalks are called filament, and their tips, which are like tiny pouches, is called the anthers. And the anthers store pollens, the eolies dust. The female part of a flower is called the pistil. A flower may have one or more pistils. The pistils is the innermost part of a flower. It has a long tube-like part called the style. The top or head of the pistil is called the stigma. That perfect flowers. There are two types of flowers. One is called perfect flowers, other is called imperfect flowers. Perfect flowers that has male and female structure in one flower, and imperfect flowers that does not have both male and female structure. Stamen, male structure of flower. Anther, part of stamen that contains pollen. Most flowers have both male and female reproductive organs. The stamen is the male reproductive part. The pistil is the female reproductive part. Flowers that contain a functioning of male part and a functioning female part are referred to by botanists as perfect flower. For example, lilies, amaryllis, and many examples are there. And imperfect, if the stamen is missing or underdeveloped, the flower is considered female. Perfect flowers that has male and female structure in one flower. And imperfect flowers, that is imperfect flowers, flowers that does not have both male and female structure. Stamen, male structure of flower, anther, part of stamen that contains a pollen. Now I would like to give you few examples of perfect flowers. अर्थात वो flowers जिसमें चारों stamen, pistils, petals and sepals ये चारों part उसमें मौजूद है. तो हम सबसे पहले आपको roses दिखाना चाहते हैं. This is the roses. Now tulips, lilies, orchids, apples, cherries, petunias, sunflower and mustard. So these are the example of perfect flower. Now some examples of imperfect flowers. Number 1, quera, daisy, spider, cushion, begonia, mage, pumpkin, papaya, bitter gourd and cucumber, etc. These are imperfect flowers. So these are the examples of perfect and imperfect flowers. Now I will show you the different parts of a flower. See the flowers here. Very sincerely you see here. This is the anther. This one is filament. The tube-like structure is called filament. Anther and filament together form a stamen. And then here you can see this one. This is called stigma, and the tube-like structure is called style. And at the bottom, this is called ovary. Inside the ovary there is ovules. And stigma, style and ovary together form pistil parts of a flower. As I have already discussed that stamen part
that is inside the petals, like the stamens. Stamen is the male reproductive part of a flower, and the female part of a flower is called the pistil. This is the female part. And now at the bottom you can see there, this one is petal, and this the leaves like a structure you have seen here. I have already shown it, that is a sepal. So stamen, male reproductive part, pistils, female reproductive part, petals, this one is called petals, and that one is sepal. अर्थात ये स्टेमेन, ये पिस्टिल्स, ये पेटल्स और ये सेपल, जिस फ्लावर में ये चारों पार्ट मौजूद रहता है उसको हम परफेक्ट फ्लावर्स कहते हैं। और जो इम्परफेक्ट फ्लावर्स होता है उसमें चाहे तो स्टेमेन रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नहीं तो पिस्टिल रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस प्रकार के दोनों में से कोई एक पार्ट रहेगा तो वो कंप्लीट नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड imperfect flowers. Now I would like to tell you something about pollination. That is the job of the flower, as you have learnt, is to help produce new plants. That is, new plants grow out of seeds which form the ovules. But ovules can turn into seeds only when they join up with pollen. Now pollinators अर्थात इसमें जो हम बताएं पॉलिनेशंस के बारे में, तो उसमें मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ये जब ये स्टिग्मा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ जब भी वो मिक्स्ड करेगा, इन दैट सिचुएशन दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और जो ये ट्यूब के अंदर में जो ओव्यूल्स है, इसमें जाके सीड एक्यूमुलेट होता है, and this seed is the new plants, that is new plants will grow from that seed. Now pollinator, this is where bees, butterflies, birds, even bats and snails come in flowers, have pretty colors, store nectar for a purpose. When an animal visits a flower to feed on nectar, pollen gets rubbed against its body, and when it visits the next flower, it deposits the pollen of the stigma of that flower. The transfer of pollen from the anther to the stigma is called pollination. Now, and is called pollinators. And here, when pollen is transferred from the anther to the stigma of the same flower or another flower of the same plant, we call it self-pollination. And when pollen is transferred from the anther of a flower on one plant to the stigma of flower on another plant of the same type, it is called cross-pollination. Now try to understand this. कभी कभी कुछ इंसेक्ट जैसे मधुमक्खी, कोई कीड़ा, ये लोग अक्सर क्या होता है आके ये स्टेमन पार्ट्स में जो एंथर दिखा रहे हैं बैठ जाता है, उनके पैरों में इसमें जो पोलन ग्रेन्स होता है वो चिपक जाता है, और ये फिर उड़ के उसी सेम प्लांट्स का स्टिग्मा में जब बैठता है तो वो अपना पैर में जो पोलन ग्रेन्स लगा हुआ था वो स्टिग्मा में छोड़ देता है। और ये स्टिग्मा जो है ये फीमेल पार्ट है, और ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के दोनों के कॉम्बिनेशन से वो जो है न्यू सीड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यहाँ पर पॉलिनेटर हो गया बीज या वो इंसेक्ट जिसके माध्यम से ये पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हुआ। तो इस प्रकार एक ही प्लांट में, फ्लावर में अगर वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद होता है, तो इन दैट सिचुएशन उसमें जो भी इंसेक्ट है जैसे बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, तो ये जब भी बैठते हैं तो उसमें से पोलन ग्रेन एंथर में से उसके पैरों में चिपकता है, और वो जब जाके फिर स्टिग्मा में बैठता है तो वो मेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ जब कंबाइन करता है, इन दैट सिचुएशन यहाँ पर पॉलिनेटर हो जाएगा बटरफ्लाई। और इस प्रकार के बहुत सारे इंसेक्ट है जो इस प्रकार एंथर को लेकर स्टिग्मा में छोड़ता है, तो मेल और फीमेल की जो यहाँ कॉम्बिनेशन है उससे एक न्यू सीड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार के एक ही फ्लावर में अगर दोनों मौजूद है और उसमें एंथर स्टिग्मा से मिक्स्ड होता है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशंस।
Another is called क्रॉस पॉलिनेशन. जैसे कि सनफ्लावर, कोई भी प्लांट है जिसमें एक ही फ्लावर में आपको जो है मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, दोनों में से कोई एक पार्ट उसमें मौजूद है. इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि जब वो इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई, एक सनफ्लावर है फॉर एग्जांपल या कोई और भी फ्लावर्स को हम इसमें ले सकते हैं, उसमें एक जैसे बैठा उस फ्लावर के ऊपर तो उसके पोलन ग्रेन उसके पैर में चिपक गया, और सेम फ्लावर वो दूसरा प्लांट का जाके जब वो बैठता है उसमें मान लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बैठा और वो पोलन ग्रेन जो उसके पैर में स्टिक हो गया वो जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में छोड़ दिया. तो इस प्रकार के एक अलग अलग प्लांट का फ्लावर में जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो मिलन होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. तो इसमें जो इंसेक्ट कैरीज करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के साथ वो कंबाइन कराता है, उसको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं. तो इसमें और भी कई कारक है जैसे विंड एंड वाटर. दैट इज नॉट ऑल प्लांट्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर पॉलिनेशंस. Cereals, plants, grass, bamboo, etc. depends on the wind for pollinations. Their pollen is very light, so the wind carries it easily and deposit it on the stigmas of the flowers of other plants of the same type. हवा और पानी की माध्यम से भी वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलन हो सकता है. And why should a plant disperse its seeds? This is the question. Now, dispersal of seeds, birds, bats, elephants, monkeys, and apes are some animals that help disperse seeds. Other animals become couriers unknowingly, and the fruits and seeds of same plants have spikes and hooks that get attached to an animal's fur or feathers. So, clothes, bags, and shoes. Later, they are brushed off by the animals. Some seeds have wings, feathery tails, and fluffy hair all over to help them fly in the wind. And here, I would like to finish these chapters here. And in next class, I will start chapter 6. So, hello, guys. You should follow this video clip, and we'll try to understand what I have told you. Thank you.